Hey everybody, welcome to Vasu's Vegetarian Kitchen, where I believe everyone is a star. I hope you all are doing well and are safe around the world. Subscribe to my channel, subscribe now and hit that bell icon so that you are notified of my new video. The கோஸை வந்து நல்லா இது பண்ணி வச்சுருக்கு, நல்லா சாப் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இப்போ நான் இங்கே வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். அதில் நான் பெருங்காயம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுட்டேன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன். கடுகு வெடிக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நான் இந்த வெத்த மிளகா நான் போட்டுக்க போகிறேன். ஸோ எனக்கு வந்து முட்டைக்கோஸ் வந்து ரொம்பவுமே பிடிக்கும். எனக்கு முட்டைக்கோஸ் சாதமாக ரொம்ப சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்கும் எனக்கு. ஐ ஹோப் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே உங்களுக்கும் இப்படியே முட்டைக்கோஸ் சாதம் சாப்பிட்றதுனா ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். கோஸ் சாதம் ஆர் கேபேஜ் ரைஸ் as they say, கேபேஜ்னு சொல்கிறது. ஸோ ஐ லவ் ஈட்டிங் கேபேஜ் ரைஸ். ஸோ what are we making today? Making cabbage curry, बंद गोभी की सब्ज़ी and Moringa Vathakuzhambu or Murungukkai Vathakuzhambu. ஸோ இப்போ இந்த கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தோம். இப்போ நான் இந்த வெத்த மிளகாவை போட்டுட்டேன். அடுத்தது இங்கே ஒரு டீஸ்பூன் நான் தாளிக்கிற உளுத்தம்பருப்பு போட்டுட்டேன். ஸோ இதை ஒரு சாட்டே பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எப்பயுமே என்ன கவனமாக இருக்கணும்னா, இந்த கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுருங்க. ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த கேபேஜ் திருச்சினதை நான் இங்கே வந்து இதில் சேர்த்துடுறேன். எனக்கு கேபேஜ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும், எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு முட்டைக்கோஸ் சாதம்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி சப்பாத்தியும் முட்டைக்கோஸும் கேபேஜ் தொட்டுன்னு சாப்பிட்டா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா, நீங்கள் இது வரையும் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் hit that subscribe button. Share this video with your family and friends, and also hit that bell icon so that you are notified of my healthy and simple and healthy vegetarian recipes. So I've added the cabbage here. So just mix it up. I've added mustard seeds, dried red chilli, Asafoetida Powder, and the cabbage. This is 200 grams of chopped cabbage or बंद गोभी, जिसे हिंदी में बंद गोभी कहते हैं. तो इसमें 200 ग्राम बंद गोभी गया है, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून स्प्लिट उड़द दाल, 1 से 2 टीस्पून तेल टेम्परिंग के लिए. तो आई एम गोइंग टू ऐड नाउ I'm going to add a teaspoon of turmeric powder now. It's a very simple curry recipe and it's very also good for health. So I added a teaspoon of turmeric powder. What I'm going to do then is give it a little, saute it a little, mix it a little bit, and I'm going to add salt. You can add salt accordingly. நீங்கள் உப்பு வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கணும். ரொம்பவுமே போட்டிங்கன்னா நான் வந்து கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் சொல்ல மாட்டேன். If at all, if you want the measurement for salt, I'll say around 1-2 teaspoon maximum, not tablespoon. So I'm going to add salt now. So I'm going to add here a teaspoon of salt. Just add it on all the sides, and I'm going to give it a mix. So do let me know in the comments as to if you like cabbage and how do you eat cabbage. நீங்கள் உங்களுக்கு முட்டைக்கோஸோ கேபேஜோ இல்லை பந்த் கோபி, நான் 3 லாங்குவேஜ்லையும் சொல்கிறேன், மல்டிலிங்குவலாக இருக்குது இந்த வீடியோ. ஸோ do let me know in the comments as to whether you like cabbage, and if you like cabbage, what do you eat with it? Eat it with. So whether you have cabbage with chapati, or you eat cabbage rice, or if you would like to have it in between your bread or sandwiches,
as a vegetable sandwich. So do let me know in the comments below. Look at the color. The turmeric is absolutely looking great, and the cabbage is looking absolutely great. And after the turmeric has been added, I have not added any chili powder here. That's because I have added dried red chili here already. நான் இங்கே வந்து இதை வந்து இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக I am going to add a quarter glass of one fourth of water into it for it to cook, and I am going to close the kadai, and I'll show it to you once it is done. Once it is done cooking. So just mix it a little bit more, and you can add green peas to it. You can add coconut at the end for garnishing. I do not have coconut right now, so I am not going to add that. So, but I'll show it to you when it is done. So I am not adding water to it, but instead I am also adding curry leaves, which I should have added before. So curry leaves gives a great taste to your food, and it is also healthy. It is good. You should add it in your food preparation. So आपको करी पता तो हर इसमें डालना चाहिए, क्योंकि सेहत के लिए अच्छा है. तो நான் இங்கே கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன். நான் ஜலம் சேர்க்க போகிறது இல்லைண்ணா. நான் அதை மூடி வைக்கிறேன். அந்த இதுலேயே ஸ்டீம்லேயே அந்த வாட்டர் இருக்கிற கொஞ்சம் கண்டென்ட்லேயே அது முட்டைக்கோஸில் இருக்கிறதுலேயே அது வெந்துடும். இந்த ஸ்டீம் இது வந்து உங்களுக்கு அது குக்காய் இந்த பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அதுலேயே உங்களுக்கு வந்து இது வந்து குக் ஆயிரும். ஸோ இப்போ நான் அடுத்தது வந்து இங்கே வத்த குழம்பு கடாய் எடுத்துக்கிறேன். ப்ரெஷருக்கு ஒரு विसिल விட போகிறேன். ஸோ आई एम गोइंग टू प्रेशर कुक माई मोरिंगास. मैं प्रेशर कुक करने वाला हूँ इस ड्रम स्टिक को. तो जब प्रेशर कुक हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ. मीन टाइम आपको ये दिखा देते हैं कि हमारा बंद गोभी अच्छी तरह से पक रहा है, और थोड़ी देर रहने दीजिए. मैंने सिम में रखा हुआ है गैस को. मीडियम में भी नहीं रखना है आपको. यू डोंट हैव टू कीप द फ्लेम इन मीडियम. Keep it in. So if you haven't subscribed to my channel, subscribe now. This is Vasu here, where I believe everyone is a star. You can go ahead and also check out my new podcast channel, for which I have linked it in my description. You can go and check it, and please do subscribe to my channel and hit that bell icon, and share this video with your family and friends. I see nobody is watching my video. I don't know why. Any valuable feedback or suggestion is very much welcome. And I'll और और विसल को ना उड़ा पड़ा. मैंने यहाँ पर मोरिंगा डाला है प्रेशर कुक करने के लिए. तो ये जब प्रेशर कुक हो जाएगा और मैं जब निकाल लूँगा, तो मैं आपको जो मोरिंगा वत्ताकुझhambu या मुरुंगकाई वत्ताकुझhambu और ड्रमस्टिक वत्ताकुझhambu जैसे भी कह लीजिए आप, मैं दिखा दूँगा आपको. So if you are liking my video, go ahead and subscribe to my channel, and also hit that bell icon so that you are notified of my new videos. So our mutakos or band gobi or cabbage curry is ready. That's because it's been so finely been chopped. Not so finely, but it's been finely chopped that it has come up cooked well, and it's done. So it's cabbage curry, Moringa Vathakuzhambu or Murungukkai Vathakuzhambu or Moringa Vathakuzhambu for lunch. So look at the color on the cabbage. I hope you are liking it, and if you are liking this video, and if you are liking liking what I am doing, go ahead and subscribe to my channel. Support me through Patreon, for which the links are in the description box below, and I'll see you again when my moringa is pressure cooked, and I'll show it to you then. இது मुरुंगा வந்து வெந்ததுக்கப்புறம் நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். जब मुरिंगा प्रेशर कुक हो जाएगा, पक जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा. मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा. Hey everybody, welcome back. So ये பார்த்தீங்கன்னா அந்த முருங்கா நன்னா வெந்திருக்கு. ஒரு விசில் விட்டுருக்கேன். आप इधर देख रहे हैं तो देखिए ये मुरिंगा अच्छी तरह से पक चुका है. एक विसिल मैंने डाला था,
So I have cooked the moringa or drumstick for one pressure cook, so it has come out well. I have heated the कढ़ाई here. मैंने यहाँ पर कढ़ाई गरम कर लिया है. ये कढ़ाई ना வந்து இது பண்ண விட்டுட்டேன், ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வெத்த குழம்புக்கு जो वेता कुழம்பு है उसके लिए आपको तिल का तेल जो जिंजली ऑयल बताते हैं, तो उसको 1 से 2 टेबल स्पून या करची के हिसाब से आप डाल लीजिए. और ये तिल का तेल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं हमेशा यही यूज़ करता हूँ. तो नेक्स्ट दैट आई एम गोइंग टू ऐड Asafoetida powder और हींग और பெருங்காயம் ஒரு quarter teaspoon போட்டுட்டேன். அடுத்தது இதில் சேர்க்க போகிறது for tempering I am going to add Spilt Urid Dal 1 teaspoon. Fenugreek seed और मेथी के दाने 1 टीस्पून. Then I am going to add this one red chilli. So I am adding this one red chilli. So you got to saute a little bit. Keep your gas in sim, and I am going to add 1 teaspoon of Chana Dal to it. That's about it. So if you look now, just give it a saute, just saute it. आपका जो रेड चिली है वो भी अच्छी तरह से टेम्परिंग में हो चुका है. आपने उसको अच्छी तरह से सॉटे कर लिया है. तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड this moringa or murungukkai or drumstick with the water into it. So what I'm going to do is give a little stir to it. And I'm going to add the Vathakuzhambu powder, and I'm also going to add Sambhar powder to it. So here I am adding the Vathakuzhambu powder. I am adding 1.5 teaspoons of Vathakuzhambu powder, which is a ready-made powder. You can also grind it in your home. And now I am going to add, अभी मैं ऐड करने वाला हूँ, अपन ऐड करना पड़ता है. I am going to add homemade Sambhar powder also to it. So this is smelling very tasty, and if you are liking this video, please do not forget to subscribe to my channel. I'm going to stir it so that the moringa mixes well with the masala, with the homemade sambhar powder. Then I'm going to add the tamarind water और पुली जलाना है पसे का बोरा है. मैं इमली का भी पानी इसमें डालने वाला हूँ. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेट मिलता रहे. तो यहाँ पे मैंने इमली का पानी इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके रखा हुआ है. सो आई हैव मैरिनेटेड द tamarind एंड salt here in water. So I'm going to add this now to the already cooking Vathakuzhambu, so that you need to pour it under control so that the tamarind doesn't get added to the sambhar. So this is looking great. Look at the color. This is Moringa Vathakuzhambu for lunch. Moringa Vathakuzhambu and band gobi, mutakos or cabbage for lunch. So if you are liking what you are watching right now and what you
If you're liking it, go ahead and subscribe to my channel, which is Vasu's Vegetarian Kitchen. So let it cook. Once it is done, I'll be adding a little quantity of jaggery to it. मैं इसमें गुड़ भी डालूंगा ना அதில் வந்து கடைசியில் வந்து இது ஆனதுக்கு அப்புறம் வெல்லம் சேர்ப்பேன். குழம்பு is getting ready. It's smelling, I mean the aroma, the flavor is actually I mean looking fine, and it is tasting and it's smelling great. The oil has already separated, so it has cooked well. It has to cook well a little bit more. So what I have done here is I have added 3 tablespoons of rice flour to make it into a thick consistency. So I have just added it to the, I have taken 2 ladles of the Vathakuzhambu, and I have added 3 tablespoons, or say sorry 1 tablespoon, 2 tablespoon, and I have just added it to the Vathakuzhambu so that it is thick in consistency. You don't need a watery Kozhambu or Sambhar. Kozhambu in the sense, so take a little bit more of it. It's looking awesome, and the flavor is, I mean I can't just tell you. इसका ना जो स्वाद है ना, जो इसका जो स्वाद आ रहा है ना और खुशबू जो आ रही है ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता. तो इसको थोड़ी देर और मैंने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून का चावल का आटा मिलाकर मैंने इसमें घोल मिक्स कर दिया है ताकि इसका थिक कंसिस्टेंसी हो. ये देखिए. तो अभी और 2 से 3 मिनट तक इसको कुक होने दीजिए. तो हमारा रेडी है बंद गोभी की सब्ज़ी, मोरिंगा वथाकुझhambu और मुरुंगा वथाकुझhambu और कैबेज करी फॉर लंच. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और वो बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके. और आप मुझे सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. ये और वथाकुझhambu जैसे बोलते हैं, साउथ इंडिया में बहुत फेमस है. आप भी ट्राई करके बताइए. ये लंच में खाया जाता है और इट इज़ वेरी टेस्टी. यू कैन ऑल्सो हैव इट विद चपाती इफ़ यू वांट टू. आई मीन इट डिपेंड्स अपॉन योर इमेजिनेशन. तो ये आ चुका है. तो ये देखा आपने. तो हमारा कुक हो चुका है. तो इसमें लास्ट में मैं क्या करूँगा, मैं इसमें आई एम गोइंग टू ऐड जैगरी पाउडर, और जो जैगरी भी डाल सकते हैं, या आप इसमें जैगरी का जो ब्राउन शुगर होता है वो भी डाल सकते हैं. तो डालते वक्त मैं दिखाता. तो हमारा वथाकुझhambu रेडी हो चुका है. देखिए. तो मैं इसमें अभी क्या ऐड करने वाला हूँ, कंट्री शुगर. तो उसमें मैं ऐड करने वाला हूँ हाफ टीस्पून ऑफ कंट्री शुगर. आपको ये मिल जाएगा, किसी भी दुकान में मिल जाएगा आपको. तो इसको मैं ये किस लिए डाल रहा हूँ, टेस्ट एनहांस करने के लिए. ये देख रहे हैं आप, मोरिंगा हमारा kozhambu रेडी हो जाएगा. तो इसको थोड़ी देर और पकने दीजिए, क्योंकि मैंने इसमें कंट्री शुगर डाला है. நான் அதில் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன், 1/2 டீஸ்பூன். அது வந்து நல்லா எல்லா இதையும் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அட் த சேம் டைம் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க, ஸோ தட் யூ கெட் மை notifications of my new videos. Ready. So I have the rice. Thanks for watching. I have the cabbage curry or muttagos curry. I have the Vathakuzhambu, Moringa Vathakuzhambu or Murungukkai Vathakuzhambu, and I've got here pachadi. This is kheera or cucumber pachadi, which is basically kind of raita, if you want to call it. It's been garnished with, it has been tempered with mustard seeds, red chilli, and hinka powder. So if you're liking what you are watching right now, go ahead and subscribe to my channel Vasu's Vegetarian Kitchen, where I believe everyone is a star. Thanks for watching.